Assalamu alaikum dear students and respected parents, hope you all are fine. So एप्सिक सिस्टम का आज फर्स्ट पेपर कंडक्ट हुआ है फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स का 24-25 कोल्ड एंड वार्म रीजन का. होपफुली स्टूडेंट्स आपका आज का पेपर अच्छा हुआ होगा. क्लास 8th का आज मैथ्स का पेपर था जो कि टोटल मार्क्स 75 थे. आपके साथ मार्किंग स्कीम शेयर की गई थी, ऑब्जेक्टिव वर्कशीट से शेयर की गई थी और पास्ट पेपर शेयर किए गए थे. सो नाउ I'm sharing answer key of the MCQs and the complete question paper with you. So आप चेक कर लें कि आपके कितने MCQs करेक्ट हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. Complete solution of the paper will be discussed later on. So section A आपका 15 marks का था. Question number 1, what's the probability of getting odd number if the dice is drawn? So the correct option is B. What will be the probability of losing a game if the winning probability is 0.3? So the option number A is correct. Which of the following represent the triangle with sides 5, 12 and 13 centimeter? So the correct option is C. A card is drawn from the pack of 52 cards. What is the probability of getting a king or an ace? So it's the D option is correct. यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कुछ हो सकती थी क्योंकि एक्सरसाइज में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं था. लाइक डेक ऑफ कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सिक्स्थ इज if the circumference of the circle is 64 pi, then the area of the circle in term of pi is. The option is correct. What is the formula to calculate the area of the sector? So C option is correct. Then what will be the radius of the hemisphere if the curved surface area is 200? So option number we have A is correct. What will be the height of the pyramid if the volume of the pyramid with the square base of length 5 centimeter is 5 meters centimeter 75 meter cube? Option B is correct. What does an enlargement transformation do with the shape? So option number C is correct. Which of the following congruence tests represent the statement? So if you have two angles and one sides are equal to two corresponding angles and sides of one side of another triangle, then we have D option is correct. Then in MCQ 12 you have A option is correct. In 13 you have D option is correct. And 14 you have D option, A C option is correct. And 15 you have A option is correct. Then आपके पास सेक्शन B था, ठीक है. सो आप इसको देख लें अपने क्वेश्चन पेपर को एंड डिटेल में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे. If you want the solution of this paper, then you have to comment me in the comment section. So हम इसे solve कर लेंगे. We can solve it in the live class or we can solve. I will provide you the solution in next video. So hopefully students आपके पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा and आपकी बाकी पेपर्स की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी. So now prepare yourself for the next paper. So best of luck for your rest of the exams. Take care and Allah Hafiz.